Hello students, so in this class we will discuss the expectation value of an observable. So write down the expectation value. देख पिले क्वांटम मेकानिक्स रे एक्सपेक्टेशन वैल्यू माने कौन देख क्लासिकली इटा को आम क्लासिकली केमती पिक्चराइज करवा देख क्लासिकल तुम जहाँ एवरेज बोली कहू कह एवरेज वैल्यू क्वांटम मेकानिक्स रे एक्सपेक्टेशन वैल्यू तार सिमिलर मीनिंग ठीक अच्छे तो क्लासिकली गोटे सिस्टम आम धर गोटे क्लास रे सपोज N1 स्टूडेंट्स रखिंट x1 मार्क रखिंट केते जण ना N1 जण सिमिलरली N2 स्टूडेंट्स रखिंट x2 नंबर and N3 number of students केते रखिंट ना x3 सो तुमको ए पचरा ही हबो कि से क्लास रो एवरेज मार्क केते तो केमती आम कैलकुलेट करूँ ना सपोज x बार इज द एवरेज नंबर दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच N1 x1 प्लस N2 x2 प्लस N3 x3 एमती जितेटा तुमको नोन थी वैल्यू होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स N1 प्लस N2 प्लस N3 yes or no so it can be written as sum over ni xi divided by sum over ni जदि total number of students capital N hela then this is equals to sum over ni xi divided by n where n is the total number of students ओके सो सेम सिमिलर प्रोसीजर रे आमे कौन करिबा ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिटरमिन करिबा गोटे ऑब्जर्वेबल रा को सिस्टम रे इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम सो दिस इज द क्लासिकल सिस्टम क्लासिकल मैकेनिक्स रे क्वांटम मैकेनिक्स रे आमे एक्सपेक्टेशन वैल्यू केमती डिटरमिन करिबा देखो क्वांटम मैकेनिक्स रे आमे पढ़ी आगुरु जे एटा केवल गोटे जदिव एटा सबु केस रे क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल मोस्टली एटा देखाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हम पढ़ी आगुरु तो जेहेतु दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल तांकर स्पीडटा भी सेते अधिक दे मूव विथ ए वेलोसिटी which is nearly equals to the velocity of light okay तो गोटे सिस्टम रे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत स्पीडीली मूव करती तो आम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन पढ़ते कि आम एक्जाक्टली गोटे क्वांटम मेकानिकल सिस्टम रो पोजिशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिटरमिन करि परिबानी जदियो साइमल्टेनियसली डिटरमिन करिबा सेटा एक्यूरेट आसीबनी तो आम साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली आपको डिटरमिन करि परिबा नहीं एटा हमर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थिला तो सिमिलरली आम गोटे सिस्टम रो सपोज गोटे एटॉमिक स्ट्रक्चर आम नबा एटा सपोज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड इट सो वी कैन नॉट डिटरमिन exactly any observable quantity related to the electrons accurately because electron is a microscopic particle and it moves very speedily inside the atom so we cannot determine its position momentum and also energy with perfect accuracy with 100% accuracy so in this case we can measure but though we cannot measure this quantity accurately but we can have its energy position and momentum this quantity with an average value so we can calculate its expected values of this quantity
Okay, so these expected values are known as the expectation values. So we cannot determine the most probable or exact result that you could expect. Okay, so only we can measure the expectation value of all the observables which are related to the microscopic system, that means in quantum mechanical system. बुझीगला क्लासिकली आम एक्सपेक्टेशन वैल्यू आम कौन जानूले कि सेटा गोटे एवरेज वैल्यू जोटा आम क्लासिकल मेकानिक्स जानूले क्वांटम मेकानिक्स रे सेटा आम कहीपर कि तार एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ओके, सो नाउ we'll discuss how to calculate a expectation value of an observable. So if A is the physical observable, first we have to know the operator associated with that. So if A cap is the operator representation of the observable A, then what is the expectation value? केमती डिनोट करा जाए एक्सपेक्टेशन वैल्यू केमती तुम्हें लिख ए कैप रो एक्सपेक्टेशन, इट इज डिनोटेड एज दैट. सो दिस इज इक्वल्स टू, सपोज दिस the whole system is in the state of psi. If psi is the state which describes this system and we want to evaluate the physical observable A, so the expectation value of this observable is A cap ro expectation is equals to psi A cap bra psi A cap and then ket psi divided over this inner product of psi. So in this way you can calculate the expectation value. Okay, and if psi is a normalized state, यदि psi a normalized state है, then psi inner product of psi is equals to 0. So in this case expectation value of A is equals to only this psi A cap psi. जदि एटा नॉर्मलाइज्ड ही नथिबो देन आमे ए क्वांटिटी को डिवाइड करिया को पड़िबो psi into psi. So how can we write the integral form of this value? So in other words you can write A cap expectation is equals to, if psi is the state, you can write minus infinity to plus infinity psi star A cap psi. If it is one dimension then you can write dx or dy or dz, and if it is three dimension you can write dx into dy into dz or d tau. So first write down this and I will explain these things. So divided by psi star psi dx. So this is the integral representation of to calculate the expectation value of physical observable A cap. So this is for one dimension. So in three dimension A cap expectation is equals to minus infinity to plus infinity psi star A cap psi d tau divided by psi star psi d tau, where d tau is equals to dx dy dz. So this is for three dimension. Okay, now we will solve some example so that it is clear to you that how to calculate the expectation value of an observable. So write down example 1. So
सपोज गोटे स्टेट दिखाई psi इज इक्वल्स टू 1/√2 phi naught plus I phi 1, where these two are orthonormal wave function. orthonormal आगुरी पढ़ाई orthonormal wave functions. orthonormal माने कौन जदि sin 0 को sin 0 सहित मल्टीप्लाई हम तो रिजल्ट केते आसीबो 1 phi 1 को phi 1 सहित मल्टीप्लिकेशन करा हम रिजल्ट आसीबो 1 जेहेतु phi naught are orthonormal means orthogonal plus normalized. Okay, so and if we multiply psi 0 with psi 1, this is equals to 0, and psi 1 psi naught, this is also equals to 0. So this is the case of orthonormal wave functions. So এটা given अछि, and हमको आउट एटा होची ग्राउंड स्टेट, दिस इज द फास्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड आउट कौन गिवन अच्छी ना E0 and E1 are the ground state and fast excited state energies. So you have to find out the expectation value of energy. Energy expectation केते हबो. So what is the formula to find out the expectation value of an observable? Just write down. So E cap ro expectation is equals to, we know that psi, E cap operator psi divided by psi into psi. Okay, so just first calculate this term, psi into psi. So this is means, so this is brass psi, this is kate psi. So brass psi means psi star. Okay, psi star into psi. So केते हबो psi star is 1/√2 phi naught. इट केते आसीबो psi star means just complex conjugate plus psi रो केते minus I phi 1. This is psi star and psi is 1/√2 phi naught plus I phi 1. So this is equals to, now you have to put these 4 conditions. Okay, so first term is 1/√2 phi naught into 1/√2 phi naught. So phi naught into phi naught kete 1. So this is 1/√2 into 1/√2, so which is 1/2, and this product is 1. Then this term multiply into this, so this is equals to 0 by using this condition. Okay, now third term is this term into this term, so here phi 1 into phi naught, this is also equals to 0 by using this condition. And the fourth term is this into this, so this is minus, again I square minus, which is plus, then phi 1 into phi 1, this is 1. So this quantity is equals to 3/2. So now we have to calculate the upper term, which is phi E cap, sorry, psi E cap psi. This is equals to, just write down here also, this term means psi star, this is psi. Okay, direct notation. So 1/√2 phi naught minus I phi 1, then E cap 1/√2 naught plus I phi 1. So हमको गिवन अच्छी कौन ना E naught होची तार ग्राउंड स्टेट एनर्जी. That means if E cap act upon phi naught, it will give E naught and then phi naught, and if E cap operator acts on phi 1, it will give E1 and phi 1. So this is the meaning of that. So just use these terms.
So first term will be 1 by 2 phi naught E1 phi 1. So E1 sorry E cap phi naught E naught phi naught. So the value is E naught and the जो phi naught term टा आसीबो सेटा again phi naught सहित multiply हिजबो जार value आसीबो 1. Again similarly second term this term into this term, this will 0, and third term is this term into this term, this is also 0. Then the fourth term, this is plus E cap action phi 1, that is E1 जोटा कि हमको गिवन अच्छी. Okay, so again phi 1 into phi 1 which is equals to 1. So then just now you got this term and also this term, so just put this value and get the answer. That is E cap expectation is equals to 1 by 2 E naught plus E1 divided by psi into psi केते आस्तिला 3 by 2. So this is 2 by 3 divide इतला then multiply कले 2 by 3. So केते इटा हला E naught by 3 plus 2 by 3 E1. So this is the answer. बुझेला. Then example number 2, if एटा निजे करिया को ट्राई करा. गोटे स्टेट गिवन अच्छी psi is equals to root 2 by 3 phi 1 plus root 3 by 3 phi 2 plus 2 by 3 phi 3 and given कौन अच्छी H Hamiltonian operator phi 1 is equals to E phi 1. That means Hamiltonian टा जदि एक्ट करिबो काहा उपरे phi 1 उपरे हमको वैल्यू केते मिलिबो E. Okay, then H phi 2 is equals to 2E into phi 2 and H phi 3 is equals to 3E into phi 3. So now just calculate the expectation value of energy. Okay, so find E expectation. केमती बाहरिबो देखो, just write down the formula first. So expectation value of energy is equals to psi हमारा Hamiltonian operator then psi divided by psi into psi. So Hamiltonian means energy, so you can write H also. So फास्ट आम चेक करवा सिस्टम टा नॉर्मलाइज्ड अच्छी कि नहीं. नॉर्मलाइज्ड जदि हेतिबो ए क्वांटिटी टा 1 हेजिबो. सो फास्ट चेक साई इनटू साई. सो जो भी क्वेश्चन आस्थाओ मैं फास्ट ए क्वांटिटी कैलकुलेट करिबो. 1 होतले सेटा नॉर्मलाइज्ड जस्ट एटा कैलकुलेट करिबो. जदि हो नथिबो ए क्वांटिटी को डिवाइड करिबो. तो फार्मूला एटा होची फार्मूला. ए फार्मूला को यूज करिबो. साई नॉर्मलाइज्ड हो कि ना हो एटा ए फार्मूला को बेस करके प्रॉब्लम करिबो. सो फास्ट साई इनटू साई केते आसीबो. एटा सब रियल क्वांटिटी अछि. हमें ब्रा साई जगह रे केवल से क्वांटिटी ही अगेन लिखिबा. जो जेहेतु इटी आई टर्म किछि नाही. सो एटा केते रहइबो सेम साई जहा थिला से ही रहइबो 2/3 phi 3 into ket psi. एटा किछि दिया हिनी सिंबल माने तुमे बुझिबो कि एटा केट psi. ओके, गोटे एग्जाम रे दिया ही थाए किंबा गोटे गोटे केस रे एटा केवल psi बोली लिखाई थाए. ठीक अछि. सो phi 1 plus
√3/3 height 2 plus 2/3 height 3. ଏବେ just multiply करो and here psi 1, psi 2 and psi 3 are orthonormal states. So जेमती फास्ट एग्जांपल पुट करूथिलो कि orthonormal means multiplication of psi 1 is equals to 1. Similarly phi 1 is equals to 1, phi 2 is equals to 1, and phi 3 is equals to 1. And if phi 1 is multiplied by any other states like phi 2 or phi 3, and that product will be 0. So put this condition here. So first term is 2/9, this term with this term. Then आम आउ किसी कैलकुलेट करिया दरकार नहीं कारण आउ सब प्रोडक्ट 0 आसीबो phi 1 phi 2 संगे 0 आसीबो phi 1 phi 3 संगे भी 0 आसीबो. देन आम सेकेंड टर्म को जीवा तो √3/3 phi 2 क्या संगे गोटे देले रिजल्ट दब ओबियसली phi 2 टर्म जोटी थिबो. सो देन आम डायरेक्ट लिख दबा जे केते हबो ए दुटा टर्म आम देखिबा. सो एटा हबो 3/9 phi 2 into phi 2 1. सिमिलरली ए टर्म क्या सहित मल्टीप्लाई करी हम ए दुटा वैल्यू 0 आसो ओनली phi 3 टर्म. सो दिस इज 4/9. सो यहाँ केते गला 9/9 इज इक्वल्स टू 1. सो इथर आम जानले कि ये जो स्टेटा आमको दिखाई नॉर्मलाइज स्टेट. सो आमको आ बेसी किसी करिया पड़िबोनी आमको केवल so expectation value of E here is equals to only psi h psi. so এটা কেতে হবো just লেখা উথরে সেই স্টেট को √2/3 phi 1 plus √3/3 phi 2 plus 2/3 phi 3. This and then the operator and then get psi √2/3 phi 1 plus √3/3 phi 2 plus 2/3 phi 3. so एबे को कंडीशन अप्लाई करिवो देखो ये ऑपरेटर अच्छी हैमिल्टनियन ऑपरेटर तुमको दिया ही ऑलरेडी. हैमिल्टनियन ऑपरेटर ए स्टेट उपरे ऑपरेट कले वैल्यू दबो ई. जदि phi 2 रे ऑपरेट कल वैल्यू दबो 2e. phi 3 उपरे ऑपरेट कले वैल्यू केते आसीबो 3e. सेही कंडीशन को इटी यूज करो करन जे केते आछी एठी केते आसीबो फर्स्ट टर्म आमे डायरेक्ट एठी करि परिबो. एठी देखो केते आसीबो 2/9 ए दुटा टर्म को मु लिखुची हला √2/3 into √2/3 केते ला 2/9 आउ केते आसीबो ना phi 1 h cap phi 1. सो ए दुटा आमे फर्स्ट देखिबा ऑपरेट करिबा h cap को phi 1 संगे दे हला केते हमर वैल्यू आसीबो ना e into phi 1. सो e आगे आसीबो तापर phi 1. सो phi 1 into phi 1 केते 1 हला तापर नेक्स्ट टर्म आ बाकी तक टर्म तो 0 हो जिवो तो आमे लिखिबानी. नेक्स्ट जिबा phi 2 टर्म को. सो phi 2 का सहित प्रोडक्ट करी हबो ए टर्म संगे ओनली बाकी टर्म संगे 0. सो आमे केते लिखि परिबा 3/9 phi 2 h cap phi 2 h cap phi 2 केते अच्छी वैल्यू दबा 2e into phi 2. so phi 2 into phi 2 1. next the third term 4/9 केते आसीबो 3e phi 3. so phi 3 is also 1. so total value केते तुमर हबो ना 2/9 plus 6/9 plus 12/9 into e. so value केते हला
20 E by 9 is the expectation value of energy in this state psi. ओके सो एबे टिक्के गोटे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को जिबा एटा आस्थिला को एग्जाम रे ना CSIR नेट एग्जाम फिजिक्स रे ठीक अछि. सो एग्जांपल नंबर 3 कॉम्प्लिकेटेड नुह इजी बट टिक्के ताकू सॉल्व करिया गुट के टाइम लागिवो. सो ए फंक्शन दिया हिची वन डायमेंशन रे साई x इज इक्वल्स टू √15 डिवाइड जेते प्रॉब्लम करिवो तुमरो कांसेप्ट सेते क्लियर होबो ठीक अछि. सो एग्जांपल रे हम करबा ए स्टेट गिवन अछि a square minus x square. This is for one dimensional potential well. ठीक अछि. तो पोटेंशियल केते दिया हिची गिवन अछि पोटेंशियल दिया हिची Vx is equals to 0 when हैला and infinity otherwise. ये पार्टिकल इन बॉक्स में पढ़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम. तो पोटेंशियल एटा थिला कि नहीं पार्टिकल इन द बॉक्स रे. तो एबे तुमको कुहा हिची डिटरमिन करा तार ग्राउंड स्टेट एनर्जी. फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी. तो आम देख ये फास्ट आमको जानवाई पड़ो तार ऑपरेटर एनर्जी जेहेतु आमको कैलकुलेट करार अच्छी. तो एनर्जी रिलेटेड तार ऑपरेटरटा केते आसीबो माने तार हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम केते आसीबो. एखाटी पोटेंशियल एनर्जी जेहेतु 0 इनसाइड द बॉक्स दैट मीन्स इन द रेंज -a to +a. पोटेंशियल एनर्जी जेहेतु 0 सो द ऑपरेटर विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर and this is equals to minus x square by 2m del square by del x square. इटा मैं जानी चे. तो एबे जस्ट आउ किसी नहीं एटा ऑलरेडी तुमको दिया है ये कि नॉर्मलाइज स्टेट बोली जे. तो आमको आउ साई स्टार ए साई डिटरमिन करिवार किसी आवश्यक नहीं. ओनली वी कैन राइट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू साई स्टार h साई dx. बस खाली एतिकी करिवार अच्छी. तो h रो वैल्यू हमें जानिले एतिकी. तो ये टर्म को जस्ट एटी पुट कर साई स्टार जहाँ रहिबो साई सेया रहिबो जेहेतु किसी इमेजिनरी टर्म एठी नाही. तो जस्ट पुट करके हमें तुम्हें आंसर बाहर कर परबो. तो x रो लिमिट एठी कोठ केतिकी रेंज भीतर आसीबो ना -a to +a. जेहेतु हमें पोटेंशियल 0 नहीं को रीजन भीतर -a ରୁ +a भीतर ऑपरेटरटा क्या लिखी ए रीजन पर लिखी. तो आम एक्स्ट्रा लिमिट नबा -a to +a. एबे जस्ट पुट करके आंसर बाहर कर. सो दिस इज इक्वल्स टू -a to +a √15 बाय जहाँ वेव फंक्शन हमको गिवन अच्छी हमें सेटा लिखा 4 माइनस तापर ऑपरेटर -h² by 2m del square by del x square into the wave function into dx. अबे इंटीग्रेशन करि परिबो कि नहीं. इंटीग्रेशन केते हबो निजे ट्राई करो इंटीग्रेशन. केते आसला इंटीग्रेशन देख हम कर दूची. सो इटा कांस्टेंट टर्म हम बाहर को नहीं आस परिबा. केते आसीबो ना 15 डिवाइडेड बाय 4 into 4 16 8 to the power 5
सो ये टर्म को आम बाहर को आनी परिया आ गोटे कन्स्टांट कौन रहा ना माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m इटा को भी हम बाहर को आनी परिया सो इंटीग्रेशन केते रु केते करियो माइनस ए टू प्लस ए केते रहला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विथ रेस्पेक्ट टू एक्स केते हबो फर्स्ट डेरिवेटिव केते हबो माइनस 2x देन आउ थे डेरिवेटिव कले केते आसीबो माइनस 2 सो माइनस 2 इंटू dx सो ये केते हला इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाको आमे एपटू को आनले केते हबो 2 16 कैंसिल कले 8 हे जीवो सो 15 माइनस माइनस प्लस हे गले 8 8 पर 5 हे जीवो 2 रु 16 कैंसिल काटिली केते हला 8 एबे केते हो माइनस ए माइनस प्लस h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m एटी हबो कि नहीं देन इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx एबे यार इंटीग्रेशन करो केते एटा आसीबो 15 h क्रॉस स्क्वायर बाय 8 इंटू 2 सपोज मैं लिख पारि 16 m 8 पर 5 लिख पारि सो एटा को इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म को एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ओवर माइनस ए टू प्लस ए सो दिस इज ए स्क्वायर रहिला इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स इन द रेंज माइनस ए टू प्लस ए सो आंसर इज 2a and then minus this is x square dx so this is x cube by 3 range minus a to plus a so this is equals to 15 h cross square by 16 m e to the power 5 into 2a cube एटा केते आसीबो a cube minus 3 minus ए पुट करले केते आसीबो minus a cube by 3 so 2a cube by 3 आसीबो 2a cube by 3 बुझी हो कि नहीं so then this is equals to just बेसी किछि नहीं खाली एतिकी ए जिनसटा तुम लिखा दरकार ए जिनसटा पर बाकी कैलकुलेशन तुम निजे कर परियो सो आमे कोन कले सिस्टम रो हैमिल्टोनियन टा क्वेश्चन ने गिवन नथिला तो आम पोटेंशियल किंतु गिवन थिला सो पोटेंशियल रो आमे काढिले हैमिल्टोनियन मीन्स बोथ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जेहेतु पोटेंशियल एनर्जी 0 थिला हमर हैमिल्टोनियन टा केते हैला ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर दिस टर्म सरला आ वे फंक्शन तो गिवन थिला वन डायमेंशन आमे जानिचे रेंज खाली दरकार थिला x रो केते ना माइनस ए टू प्लस ए सेटा भी गिवन थिला ठीक अछि सो दिस इज इक्वल्स टू केते आसीबो तुम आंसर को सॉल्व करले ना 5/4 h क्रॉस स्क्वायर बाय m a स्क्वायर एतिके आसीबो तबे बुझियला एक्सपेक्टेशन वैल्यू कोन खाली तुम ए फार्मूलाटा एक्सपेक्टेशन वैल्यू रो ए फार्मूलाटा मन रखिबो आउ कौन थिला ना जदि साइटा नॉर्मलाइज्ड हेतिबो ताले ए क्वांटिटीटा केते हिजिबो 1 हिजिबो जोटा कि हम आगुरो भी पढिचे ठीक अछि आउ तुमे ताकू इंटीग्रेशन फॉर्म रे भी हम एमथि ताकू लिखि परिबा एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऑपरेटर को ठीक अछि तो एतिकी जानि था ए क्लास रे तो हम नेक्स्ट क्लास रे कोन पढिबा ना ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूज करके गोटे थ्योरम अच्छी जोटा कि इनफेस थ्योरम सेटा को आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा इनफेस थ्योरम जो थे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूटा आमे हमको दरकार एटा को यूज करके आम ये थ्योरम टा को प्रूफ करेबा ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्लास रे एटा पढ़िबा ओके थैंक यू।